this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. This healing. Thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. Thank you for my friends, Spirit. Thank you for my friends. My wonderful, my wonderful, my wonderful friends. My wonderful, my wonderful, my wonderful friends. Now thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. I wanna say thank you. Thank you. I wanna say thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. 'Cause I'm so grateful. So grateful. So grateful. So grateful. So grateful. So grateful. I'm so grateful. So grateful. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Just thank you. Thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Thank you. Thank you. 'Cause I'm so grateful. Yeah. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. I wanna just say thank you now. Just thank you now. 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 Each and every day I'm gonna say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I wanna say thank you. Thank you. Thank you. 'Cause I'm so grateful. So grateful. Oh, grateful. I'm so grateful. So I wanna say thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day, Spirit. Thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day.
wonderful, my wonderful, my wonderful friends. My wonderful, my wonderful, my wonderful friends. Now thank you for this day, Spirit, thank you for this day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. This healing, this healing, this healing day. This healing, this healing, this healing day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. Thank you for this day, Spirit, thank you for this day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. This beautiful, this beautiful, this beautiful day. I want to say thank you, thank you. I want to say thank you, thank you. Oh, thank you, thank you. I want to say thank you, say thank you. I'm so grateful, so grateful, so grateful, so grateful, so grateful, so grateful. I'm so grateful. I want to say thank you, yes, thank you. I want to say thank you, thank you, because I'm so grateful. Yeah. I'm so grateful, I'm so grateful. I'm so grateful. I want to just say thank you now, just thank you now, thank you now, thank you now, thank you now, thank you now. Each and every day I'm gonna say thank you, thank you, thank you, thank you. Good evening, namaste everyone for joining us. Thank you so much. And I really wanted to play this song. In fact, just as a representation of that gratitude which I feel for everybody who join us on these days. So thank you once again. And today we are, it's a blessing that we are on the day 11th of the Prakriti meditation series. And we are going to discuss another, a couple of important topics. And this is definitely one of the most important topics for everyone कि हम कैसे अपने चेहरे पर ग्लो लेके आए, हम कैसे young दिखे. We do a couple of things, right? We go to the gym to have that physical fitness. We go to the beauty parlors, right? So that our skin keeps glowing. But actually, ये सारी चीजें जो हम करते हैं, ये सारा external है. हम मेडिटेशन के थ्रू भी अपनी लाइफ में यूथफुलनेस और लॉन्जिविटी भी ला सकते हैं. एंड हाउ डज दिस हैपन? तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, और जब वो क्रिएट होता है स्ट्रेस की वजह से तो वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है. ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट, राइट? कॉर्टिसोल के बारे में हमने काफी डिस्कशंस किए हैं अभी तक के सेशन में. सो जब आप मेडिटेशन करते हो क्या होता है, उससे कॉर्टिसोल जो है वो आपका कम क्रिएट होता है, राइट? वो धीरे 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 श्रिंक कर जाता है एंड आपके हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं. जब आपका कॉर्टिसोल कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंसेस है बॉडी में, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. सो वी ऑल नो दैट अबाउट द डीएनए क्रोमोसोम, जो हमारी फंक्शनिंग का रीजन है, हमारी बॉडी सेल्स में जो होते हैं, हर क्रोमोसोम के एक एंड पर एक कैप होता है, प्रोटीन का कैप, विच इज कॉल्ड टेलोमियर्स. सो व्हाट हैपेंस कि क्रोमोसोम हमेशा रेप्लिकेट करता है एंड दैट्स हाउ जो उसका जो कैप पे टेलोमियर है वो शॉर्ट होता रहता है. And when the telomere becomes short, what happens that actually the cells can no longer divide and replicate by themselves. So this is the beauty how our cells are actually growing, is because that telomere is not getting shortened. अब क्या होता है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो जो टेलोमेयर का लेंथ है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. And always remember that as per research is done by the quantum scientists, the length of the telomeres is growing for meditators. वो शॉर्टन होने ही नहीं देता, बिकॉज अगर वो शॉर्ट होगा उसी हिसाब से आपकी बॉडी की जो लॉन्जेविटी है और यूथफुलनेस है उस पर इम्पैक्ट होगा. सो जब आप मेडिटेट करते हो, बिकॉज यू स्टार्ट
decreasing the creation of cortisol or the sad or the unhappy hormones in your body. What happens? The length of the telomeres is growing for meditators, helping them stay youthful, energetic, and confident, and they are living a longer life. So there are multiple researches. Even if you Google this और आप telomeres के बारे में पता करोगे, so you'll find a lot many more things about this particular, the impact of meditation on these telomeres. And also, that's why we consider that meditation is the best anti-aging tool with no side effects and zero cost. And I'm actually emphasizing on these two things, right? No side effect and zero cost. Because आप समझते हो, राइट? हम जब जिम जाते हैं या पार्लर जाते हैं तो हमें साइड इफेक्ट का भी डर होता है, हम कॉस्ट के बारे में भी सोचते हैं. देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट? सो एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर है, राइट? जो आपको यूथफुलनेस आपकी बढ़ा रही है, आपकी लॉन्जिविटी, आपको लॉन्ग लाइफ दे रही है. तो इससे अच्छी चीज क्या चाहिए? सो यू नो व्हाट हैपेंस दैट जब आपका कॉर्टिसोल, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो आपकी बॉडी में जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? जो आपके स्किन के अंदर दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइट? इलास्टिन एंड कोलाजेन. तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स जाकर आपकी बॉडी के स्किन के साथ उसकी बॉडी के स्किन के टेक्सचर में एंटर कर उसकी जो ब्यूटी है स्किन की, उसको खराब करता है. Once cortisol is released into the blood, it penetrates into the wall of the skin, disturbing the functioning of elastin and collagen proteins. And इसकी वजह से आपको जो आपकी बॉडी स्किन है वो टाइट होने लगती है, ड्राई होने लगती है. यू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू स्टार्ट like you always seem to be a very tired person, and you are like, there is hardly any energy left in the body. So all these things are because of the stress hormones which are actually getting created, and meditation helps you to to curb that the production of the stress hormones in the body. And with this, I would like to just move on to the next one. This is a beautiful book which is called The Four Agreements. And ये book मैं definitely recommend करूंगी that if you all can read this book, because it talks about whatever we are discussing in our sessions. We have been discussing a lot many things, and when it comes to the Four Agreements, this book is written by Dan McGuire-Ruths, and he's a Shama master. When practiced, actually, if you practice all these four statements, which we are going to discuss right now, it is going to enhance our relationships greatly with ourselves and others. तो आपको ये अगर चार चीजें आप अगर फॉलो करोगे, तो आपका रिलेशनशिप खुद के साथ और बाकियों के साथ दोनों ही चीजें इंक्रीज होगी, एनहांस होगी. और इनमें क्या चीजें हैं जो राइटर बहुत ही ब्यूटीफुली बताते हैं कि दीज आर द सिंपल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि आपको आपकी एक हैप्पी लाइफ चाहिए, आपको एक लिबरेटिंग लाइफ चाहिए, जो कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर नए एम्पावरिंग बिलीव्स इंपोज कर दे हमारे ब्रेन के अंदर. तो इसके लिए ये बुक पढ़ना, इसका ऑडियो बुक सुनिए अगर बुक नहीं है आपके पास, बट इसको समझना बहुत जरूरी है. Now, what are those four agreements actually? So this is an agreement with yourself that, okay, from now onwards, I'm going to do all these four things. Now, what are that? The first thing is like, be impeccable with your words. We must speak with integrity. And whenever we are talking, we have to do that with the utmost care. Again, just to reiterate the point that our mind is a magnet. If we are giving something bad to the world, you are going to get that thing back in your life. That's all. हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से बात करके दूसरे को हम let down कर सकते हैं. But actually, there will be other situations in your life wherein some other person, or maybe the same person in some other circumstance, will let you down. Because, it's not the fault of the other person. You have done that. You have created those energies. You have sent those vibrations to the universe. So what are you getting back is exactly its reflection. Life is a mirror of our actions, of our thoughts, of our words. And we have been discussing this from day one. So when we start meditating, what happens? We become mindful of the way we think and the way we speak. We express most of our emotions and feelings using words. So words are very, very important. Yesterday also we discussed about this, that हमारी reality जो life की बनती है वो हमारे words से बनती है, हमारे tone से बनती है.
तो जब इतना पावरफुल, इट्स लाइक द बुलेट, राइट? एक बार अगर गन से वो निकल गया तो वापस नहीं आएगा. इट्स गोइंग टू ईदर हार्म और maybe you can just miss a target, but actually if the person is just in front of you, it's going to harm the other person. Okay, so it's actually that powerful enough to influence everybody who's there in our life, right? So we must avoid using words that speak ill of ourselves or of others. And gossips, we know that this is irrelevant thing. Gossip is not needed in our life at all. It adds no value. हमें लाइफ में वही चीजें करनी है जिससे हमारा ब्रेथ, हमारा प्राणा एनहांस हो सके. एंड हमारी वो कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाए. आप देखो, आप जब भी गुस्से में रहते हो उसके बाद का आप इम्प्लीकेशन देखो. यू लूज सेंस ऑफ दैट, managing your emotions at that point of time. You are feeling drained after that argument with XYZ person. सो अगर आपने किसी से आर्ग्यू किया और दूसरे ने भी आपके साथ आर्ग्यू किया, वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट है, मे बी फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, actually it drains your body. And what do you want? You either take a glass of water or you start taking long deep breaths. Why? Because you are losing that energy because of that action of yours, and you need immediate energy in your body to sustain whatever feelings or actions you want to do later on, right? तो अगर मान लीजिए, मैं कहती हूँ कि अगर आपके बारे में नेगेटिवली एक बंदा दूसरे किसी से बात भी कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनकी लाइफ में और ज्यादा एजिटेशन क्रिएट होगी. बट आई एम नोबडी टू कंट्रोल दैट पर्सन, राइट? आई एम नोबडी टू मैनेज दैट पर्सन. whatever that person is doing, actually he or she will get that impact in his or her life. Then why am I getting bothered that I have to improve people's life? Believe me, the only thing which you can do is like look within and make a change in yourself. You cannot change the other person. You can be an influencer, but again, unless and until the other person who's in front of you is in a mood to accept your challenges, accept your things, whatever you're saying, you will not be able to control that person. वो उस बंदे की इच्छा शक्ति है कि वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं चाहता. अगर वो नहीं सुनना चाहता है, आप किसी भी हालत में उसकी लाइफ में 1% भी चेंजेस नहीं कर सकते. दिस इज द वे लाइफ वर्क्स. And that's why we have to be very, very aware that what are we speaking? What is the tone we are doing? Are we doing whatever we are speaking? Is that with integrity? Say whatever is there in your heart, I would say. Because see, हमें लगता है कि नहीं, दुनिया तो माइंड से खेलती है. डेफिनेटली माइंड से चलती है दुनिया. बट जब आप हार्ट वो करते हो ना, हार्ट से आप ऑपरेट करते हो, तो कुछ समय में जो दूसरा इंसान दूसरों के लिए शायद बुरा होगा, वो आपके लिए, उसकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल अलाइंड हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है. एंड दिस हैज हैपेंड इन माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो इंसान शायद आपको कभी एक समय पे आपको अपना दुश्मन समझता था, वो आपको आज की डेट में प्यार से देखेगा. या फिर अगर उसकी आपकी लाइफ में कोई भी जरूरत नहीं है, तो दैट पर्सन विल वॉक अवे फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड अ स्मूथिंग मैनर. So it won't create any kind of conflict. So always remember, the first principle of this book is actually be impeccable with your words, whatever you're saying. The second thing is that don't take anything personally. This is what the writer says. And beautifully said, right? Because I always keep telling you, हर एक इंसान की जर्नी अलग है. आज कोई आपके सामने किसी तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई आपके सामने मान लीजिए ऐसी चीजों की तरह बोल रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आपको ये भी समझना है कि एक्चुअली वो उसकी जर्नी है, वो आपकी जर्नी नहीं है. लाइक अगेन आई विल लाइक टू रिपीट दैट एग्जाम्पल विच माई स्पिरिचुअल मेंटर गिव्स, कि कोई जलता हुआ कोयला हवा में उछाल रहा है, आपने 1-2 स्टेप आगे लिया, उसको अपने हाथ में कैच कर लिया. कैच करने के बाद आप क्या कहते हो? मेरा हाथ जल गया. आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो? थिंक अबाउट इट. बिकॉज आपने ही तो वो 2 कदम आगे बढ़ा है ना, आपने ही अपना हाथ आगे किया, तब जाके वो बर्न जो चारकोल है वो आपके हाथ में आया, एंड देन यू आर फीलिंग द पेन. सो ऑब्वियसली यू विल, राइट? सो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि आप ये समझिए वो उसका जर्नी है. वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसकी जो परवरिश हुई है, उसको जो सिचुएशन मिला है, उस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है. That person has nothing against you. Believe me, it's actually against himself or herself. वो इंसान अंदर से इतना परेशान है, इतनी ज्यादा उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, कि इसीलिए वो वही नेगेटिव एनर्जी आपके साथ शेयर कर रहा है. उसके पास और कुछ है ही नहीं शेयर करने को. अगर उसके कप में लव होता तो वो आपको लविंगली देखता ना, लविंगली बात करता.
बट अगर वो है तो वो अंदर से कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, वो फुलफिल्ड नहीं है. एंड वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस. If a person is not behaving the way you want it to be, because that person is on a different journey. We are all same yet different. Because same है because उसी creator का अंश हम सबके अंदर है, but different कैसे है? क्योंकि हमारी journey अलग है, हमारा purpose अलग है, हमारा सोचने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी पूरी बचपन की चीजें आप याद कीजिए, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है. आप जिस माहौल में पले बढ़ते हो, आप जैसी कंपनी में काम करते हो, आपका जो भी सत्संग या जैसा भी आपका संगत है, उसके हिसाब से ही आप चीजें वो करते हो. आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, आपके जो भी फियर्स है, आपके जो भी एंजाइटीज है, इसके बेस पे आज की डेट में हम लोग एक्ट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that if my wife or husband is not behaving in a particular manner, it's not because he wants to let me down. It's because this is what the person has. And that's why don't take anything personally. And we need to recognize that whatever others say is just a projection of their own reality and their own dreams. If a person is happy and joyous, you will find them always interacting with everybody happily and joyously. And if the person is unhappy or stressed, they may interact aggressively. It's as simple as that. But again, don't take everything to your heart, because जब आपके बारे में कोई नास्टी कमेंट करता है तो आप पहले उसको बुरा मान रहे हो, राइट? आपने वो नास्टी रिमार्क को पकड़ा, यू आर पुटिंग इट इन योर हार्ट एंड देन इट एक्स एंड देन यू कंप्लेन कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला. वो तो बोलेगा, बट आपने उसको अपने हाथ में लगाया ना, तभी तो आपको बुरा लग रहा है. And always remember, nothing is permanent in this life. Everything is just moving and moving and moving. And hence, when you start doing meditation, it helps you to detach yourself from events, from persons, from places, and from things. So you understand that, okay, ये temporary एक phase है, ये भी चला जाएगा. And that's why we start staying in balance through meditation. What is the third principle or the agreement is that don't make assumptions. What are assumptions? Assumptions are false realities. They do not exist in our life, लेकिन हम क्या करते हैं? हम assume कर लेते हैं. क्योंकि एक बार मेरी लेट्स से मैनेजर ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था, तो अब मेरे अंदर वो अजम्पशन आ गया कि अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा या मिलूंगी तो वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा. As I told you that everything is temporary and that particular action may not be repeated again, but it's your mind which is creating that reality in advance. आप जब अज्यूम करते हो चीजों को, लोगों के बारे में, उनके शब्दों के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, उनके नेगेटिव चैटर के बारे में, तो एक्चुअली आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी ड्रेन होती है. जब आप assumption करते हो तो आपके बहुत सारे hundreds of unwanted and redundant thoughts हैं जो कि आपकी लाइफ में रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आप कहाँ ध्यान दे रहे हो? आप उस नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी लॉस पर ही ध्यान दे रहे हो. So rather than making assumptions when you meditate, what happens? You are able to express yourself fully to the world, and you're exactly able to communicate what you want them to do. You communicate clearly, you start avoiding misunderstandings, you start avoiding sadness or any kind of drama in the life actually. So any low emotions is actually something which we are creating, and that's why once you start meditating, we use a lot of this. जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी मेडिटेशन के पहले बहुत ड्रामा था. So you actually don't attach yourself to the past which has already happened. जब अटैच होगे तभी आप सैड फील करोगे. और अब जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी वो अटैचमेंट नहीं है. आई हैव लर्न फ्रॉम इट एंड आई हैव इवॉल्व्ड. Why do you want to always keep that chain, some kind of cord between your past and your present? That moment has gone. It's no more there in your life. Learn and move on. Learn because so that you do not repeat such situations again. But again, just move on. You need not to even feel anything, whatever has happened in past, because वो चला गया समय और वो वापस अभी नहीं आएगा unless until आपने अपनी mind में दोबारा वो चीज create कर ली. And the last principle over here is that always do your best. We must commit to giving our best. आपके अंदर कितनी भी क्रिएटिविटी हो, आइडियाज हो, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप जब तक अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं डालोगे, you would not see the result. And what do you mean by best efforts? It's basically not engaging with your overpowering mind, which is the emotional part of the brain I'm talking about, right? So amygdala,
also called as the non-functional part of the brain. Why? Because वो ओवर पावर कर लेता है, फिर हमें हमारे कॉर्टेक्स को यूज करने नहीं देता है. तो हमें हमेशा एफर्ट्स करना है, और एफर्ट्स कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन करवाएगा? वो आपका कॉर्टेक्स करवाएगा, अमिगडाला नहीं करवाएगा. Right? So I told you clearly that, whenever, if there is an interview tomorrow or a meeting tomorrow, your amygdala is going to just give you those fears. What if you fail? What if you reach there late? What if you get the traffic jam, etc., etc., etc. उसकी बातों को सुनो. और अगर वो ये कह रहा है कि व्हाट इफ कल बारिश हो जाए और आप मीटिंग में लेट पहुंचो, तो आप छाते का अरेंजमेंट करके रखो ना. आप टाइम थोड़ा आधे घंटे पहले निकलो, दैट्स ऑल. तो आपको वो रिस्क पकड़ना है, उसका एक सोल्यूशन देना है, एंड जस्ट पुट इट एज अ बैकअप प्लान इन योर लिस्ट, दैट्स ऑल. बट हम क्या करते हैं, हम उसी में सोचा रहे, हाँ इतनी बारिश हो रही है आज, कल भी बारिश हो गई तो क्या होगा, ऑटो नहीं मिला तो क्या हुआ, कैब नहीं मिली तो क्या हुआ, हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे. तो अल्टीमेटली जो टाइम आपके पास है जिसमें आप उस मीटिंग के लिए प्लान कर सकते हो, वो नहीं हो पाता है, बिकॉज आपने वो पूरा का पूरा टाइम जो है अपने नॉन फंक्शनल ब्रेन के साथ अच्छे से बिता दिया, खूब सारे डिस्कशंस के साथ और अपने इनर वॉइसेस के साथ कहीं पे फाइट करते हुए. When you start meditating, you know that the amygdala gets shrinked. और जैसे जैसे वो आपका amygdala shrink होता है, उसके बाद immediately आप ये समझते हो कि हाँ, ये मेरा काम नहीं है देखना, मेरा काम है सिर्फ अगले मीटिंग या इंटरव्यू के लिए तैयारी करना. So this is how, once you start meditating, you actually recognize that every regret is a fresh mistake, and it causes such more and more experiences to be manifested. आप एक चीज सीख जाओगे, आप उसके बाद जब वो सीख जाओगे, आपके लाइफ में आपके सामने कुछ नया पड़ा हुआ आएगा, फिर आप उसको भी ओवरकम करोगे, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली यू आर इवॉल्विंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. जस्ट गिव अ पॉज एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि आप अपना पिछले 10 साल पहले सोचो और आज की डेट में सोचो. हैवंट यू इवॉल्व? बट येस, आई वुड से, क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम इवॉल्व तो हुए हैं, बट बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, बहुत सारे मेहनत के साथ. क्यों? क्योंकि हमें आदत है हमारे इमोशनल ब्रेन के साथ माथापच्ची करने की, जो हमें अब मेडिटेशन के साथ ये समझ आता है कि देयर इज नो पॉइंट इन फोकसिंग ऑन दैट. सो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल आल्सो दैट अगर आप 98.3 एफएम सुनना चाहते हैं तो आप रेडियो ऑन करोगे, उसके बाद आप उसको ट्यून इन करोगे. जब तक आप 98.3 पे नहीं पहुंचोगे, आपकी वो जो भी सॉन्ग सुनना चाहते हो या जो भी प्ले हो रहा है, आप वो नहीं सुन पाओगे, राइट. 98.2 तक भी, इतने हर्ट्ज तक भी आपको वो क्लैरिटी से नहीं समझ आएगा कि वो सॉन्ग में क्या वर्ड्स है, क्या म्यूजिक प्ले हो रहा है, राइट. देयर विल बी अ लॉट ऑफ घर 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 साउंड, एंड वी हैव डन सो मेनी टाइम्स. एक्चुअली हम लोग ये बहुत बार करते हैं. तो हमें एग्जैक्ट उस वाले ट्यून पे, उस पे रेडियो स्टेशन पे जाना है, तभी जाके हम प्रॉपरली किसी सॉन्ग को सुन सकते हैं. So exactly the same thing. When you start meditating, you know that the universe has every little thing which is there in your mind. You want financial abundance, you want a big property in your name, you want any XYZ thing. Everything is there in the universe. बस आपको क्या है, ट्यून इन करना नहीं आ रहा है. क्योंकि आप जब ट्यून इन करने जाते हो, आप जब वो बोलते हो कि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके साथ साथ आपका माइंड क्या बोलता है, पैसे कहाँ है, बाकी कहाँ मिलेगा, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता. कपल ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इफ क्वेश्चंस कम इन योर माइंड. जब आप इतने मिक्स सिग्नल दोगे, तो आप खुद सोचो, वो जो यूनिवर्स है जहां पे कहीं पे वो चीज है, वो तो ट्यून इन हुआ ही नहीं. और जो वहां पे एक कहते हैं ना, वो बैठा हुआ है बोलने के लिए कि जो हुक्म मेरे आका, अब वो कंफ्यूज हो गया, तो वो आपको कैसे वो उस चीज को मैनिफेस्ट करके देगा. एंड दैट्स व्हाई वी कीप फेसिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ब्लॉक्स इन आवर लाइफ. एंड देन वी से कि हमारी लाइफ तो इतनी खराब है, हम देखो दूसरे की लाइफ, वो कितने धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा और हम नहीं बढ़ पा रहे. So even if you don't compare, you actually feel bad. And I have met people, believe me, जो ये देखते हैं कि हाँ, अगर कोई बहुत ही रिच क्लास है, एंड लेट्स से उनके यहाँ पे वेडिंग हो रही है, जैसे अंबानी की शादी आप सबको पता है. तो आई एम श्योर हर एक इंसान जो यहाँ पर है, वो अलग तरीके से उसको देखा है, राइट. देयर आर पीपल हु सेड कि ओ माय गॉड, इतना पैसा और हमारे पास उसका 0.001% भी नहीं. सो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आ जाता है. There are people who would have felt joy in enjoying that wedding, definitely, but there most of the people were like कि comparison था, हम ये नहीं कर पाते. आप देखना जितने भी memes थी और जितने भी social media में चीजें थी, actually वो comparison था definitely. And comparison is a good thing because then you make your goal. But ultimately, again, are you using your functional mind or are you using your non-functional mind? That is very, very important to understand.
आप उस चीज को, जैसे हम जन्म लेते हैं, हम अपने माँ बाप को देख के, दादा दादी, नाना नानी, टीचर, सबको देखते ही तो बड़े होते हैं ना, हमने तो कॉपी ही किया है। जो दूसरे करते हैं हम उसी तरीके से अपनी जिंदगी को संवारते हैं, राइट? सो इवन आई मीन इफ देयर इज सम गोल ऑफ योर्स, एब्सोल्युटली फाइन, प्लीज गो अहेड, कॉपी वॉट एवर आर देयर स्ट्रेंथ्स, एंड learn from the mistakes and then keep evolving. That is perfectly fine. But on the other side also, just don't engage with your non-functional mind, because it is not worth it. Believe me, I'm telling you, every little time, every little moment is very very important for us. And with that understanding कि हर वो चीज जो मुझे चाहिए वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बस मुझे वो ट्यून इन करना है। क्वांटम साइंस की बुक्स पढ़िए, क्वांटम फिजिसिस्ट के विजडम टॉक सुनिए, आपको उस समय समझ आएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके जो भी आपके सक्सेसफुल पैरामीटर्स में फॉल होते हैं, जिसने भी बिजनेस मैन है, आप उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़िए, and you will find that most of the people are actually meditating because they also understand this difference, right? So with this awareness, I would like to just move on to the meditation. We're almost at 10, and we'll do a 30 minutes meditation right now. Let me see if there are new people. One second, just allow me a second. My laptop is also getting bored nowadays, it seems. But anyways, because it is working a little slow nowadays. But yeah, so what will I do? I'll just keep sending love to my laptop that okay, let's function, keep your function as at your best, with your best performance. Yeah, so this is the meditation we are going to do today. I can see some new people, and thank you so much for joining us. Breath mindfulness meditation, which is also called Anapana Sati. Ana, which means in breath, Apana is out breath, and Sati is to be one with your breath. Okay. So as you can see on the slide right now, with your legs in a crossed position, your fingers into fingers, in a clasp position, clasp your hands, and then keep it on your lap or any comfortable place. Close your eyes, and then you just follow the voice guided meditation. You have to observe your normal, natural breath. Now, how do I do that? So, for people who are new to the meditation, they can just take a reference point on the nose anywhere and you just start observing your breath. Don't focus, don't concentrate if your breath is long or shallow. No, nothing needed. It's your normal, natural breath. Okay, you will just observe it coming inside your body through your nose and then going outside your body through your nose. That's all. There are people who can also concentrate on their third eye, the area between midpoint between your eyebrows, and then you can just keep observing your breath with a focus on that particular area. But for the beginners, I would definitely request that please just focus on your, observe your normal natural breath. And slowly what happens then when you do this, your mind starts becoming thoughtless. And in spite of the fact, because we know that our mind is a monkey mind, and it keeps repeating the patterns which were there in the past. So thoughts आएंगे आपको, ऑफिस के बारे में आएगा, वेंचर के बारे में आएगा, आपको अभी खाना खाया या नहीं खाया, या फिर बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, एवरी लिटिल थॉट विल कम, बिकॉज दिस इज द वे वी आर नाउअडेज, राइट? तो आपका जब भी थॉट आए, डोंट फाइट विद इट, दीज थॉट्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Rather than focusing or giving attention to that thought, you're going to go back and start observing your normal natural breath. Any time, like 5 times, 6 times, 7 times, आप कीजिए. जितनी बार थॉट आए आने दीजिए, लेकिन जब भी थॉट आए आपको अवेयर हो कि थॉट आ गया, तो फिर तुरंत आप अपने breath पर फोकस करोगे. So this we are going to do for around 24 minutes or 25 minutes. And before that, this process is called heart elevation process. We say when the happy hormones are dopamine हो गया, ये सारे हार्मोन्स जब आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, उस समय जो भी आप काम करते हो एक्चुअली वो अपने बेस्ट वे में होता है. So that's why we start every meditation with a heart elevation process. Same pose except that your hands will be on your chest area. Why? Because we are going to pay attention on the heartbeat for the few initial seconds. So what happens that when you start taking long relaxing breaths, you feel your heartbeat, you are actually connecting with the consciousness or the cosmos energy which is there in your heart.
And then you have to think of any past event or present event, or maybe visualize your future, whichever that gives or makes you feel any of the elevated emotions. What are these emotions? That you think of an incident which has happened in your life and you feel so much of love within, right? Or maybe gratitude, joy, compassion, kindness. I'm sure you must have helped so many people, you have contributed, and when they come and thank you, or if you see the smile on those kiddos who are there on the streets, right? Anything, just think about that. Maybe spending time, some quality time with your family or your kiddo. Actually, all these things gives you some elevated emotions. So think of that thing at that point of time. And then once you start feeling these elevated emotions, any of these or all of these, then you start spreading or sending these emotions to the entire universe, because we believe that all of us are energy. And that's why मेरी जो एनर्जी है अभी एलिवेटेड फीलिंग्स की, मैं पूरे यूनिवर्स में उसको स्प्रेड कर रही हूँ. इट विल गो ऑटोमेटिकली. आपको कोई स्पेसिफिक नहीं सोचना है. जहां वॉर लाइक सिचुएशंस है, जहां पे फ्लड आया है, जहां पे पीपल आर सफरिंग, एक्चुअली यू आर सेंडिंग योर एनर्जी टू ऑल दोज areas. Okay, so no need to think of the episode, but automatically jahan chahiye duniya mein wo chali jati hai, right? So we start with heart elevation process, and then we move on to the mindfulness meditation, breath mindfulness meditation, and you will be guided by Chandra sir on this voice guided meditation. So let's just close our eyes and focus on your breath. Keep your palms on your heart, and meanwhile I'm just playing the audio. Keep following whatever the voice guided meditation. Dear friends, dear masters, keep your hands on your chest area with your eyes closed, specs removed, with your attention on your sacred heart. Can you feel your beautiful heart? Feel the seat of all emotion, which is nurturing all life with its energies of love, joy, gratitude. Come on, friends. Connect with your heart center. Feel the beat, the rhythm of your heart. Your primary connection into this quantum field for your experiences of life. Recollect an experience from your past, from your present, where you felt enormous love, gratitude, compassion,
and relive that moment and feel that energy. Relive that moment of love, of joy, and feel that energy inside your beautiful heart. We are all deeply interconnected. Deep inside, we are specks of energy, intricately connected with each other. Love is the way. Gratitude, compassion are all the ways to become one again, to become coherent with all things and everybody. And allow yourself to direct that energy onto every corner of this planet Earth for it to be received by the needy. Where your attention goes, there the energy flows. And slowly, let's go into breath mindfulness meditation. With your eyes closed, fingers into fingers, hands rested comfortably in your lap. Observe your normal, natural in-breath and the out-breath, dear friends. Our goal is to empty the mind. Our goal is to merge into that greater emptiness, that quantum field of connectedness. When we observe our breath, the mind
becomes empty. Be with your breath. No forceful inhalation, no forceful exhalation. To your breath and allow yourself to become totally empty of all thoughts in your mind.
as your mind is becoming empty. We allow our body to function with great coherence. We channelize all that energy into the generous present moment. We become very mindful. We increase our power of thought. Be with your breath, one with that in breath and the out breath. It's natural to have thought. When you recognize you are thinking, go back to observing your breath, dear friends, and allow yourself to slowly become empty of all thoughts in your mind. Become aware of the emptiness inside of you, all around you, as you merge into your breath. Allow yourself to experience that emptiness, that blackness, that void. Spreading far and wide. Beyond your room, beyond this planet, stretching into the
endless depths of this universe. Stay aware of it, away from your body, away from your life. All emptiness is energy. That infinite field of quantum energy with limitless opportunities and possibilities. The longer you stay aware of this emptiness, where there's no body, where there's no thing, the more you become of it, the more you receive from it. This is the field of unlimited. The field of wholeness, oneness. Everybody and everything are connected. Here in this field of energy,
the longer we stay aware of this emptiness, that void, that field of light, the more coherent we become with each other. The more coherent we become with our existence. If you find yourself distracted in thought, go back to observing your breath, dear friends, and allow yourself to find that emptiness all around. Friends, at this time, let's express gratitude. It's truly an honor and privilege to be experiencing this life at this time of history. Can you be grateful to all things and everybody? Be grateful to your parents, to your teachers, your mentors. Your gratitude to everybody in your life, your family, your friends, your colleagues, relatives, partners. Give thanks to this grand nature, the bird, the fish, and the animals, and to everything we use, the technology, the system, the companies, the governments that support our life. Your gratitude to yourself
and to this intelligent quantum field. Gratitude is the ultimate state of receivership. I can rest. I am safe. All is well. All is well. Relax your body I can and let your autonomous nervous system repair your body. safe. All is well. All is well. I can rest. I am safe. All is well. All Recollect your experiences from the session. How did you feel? What did you see? What have you experienced? And whenever you're ready, you can keep your hands on your eyes for 5 seconds, and then you may open your eyes. And slowly just open your eyes with a broad smile on your face. Thank you, thank you, thank you. Akansha, lots of love to you. And I'm sure you must have got some extra power, energy, love, all the vibrant energies through this group meditation also today. So we all are with you, okay? So we are not meeting tomorrow through a live session, as I and Shivani both are occupied elsewhere. And I'll share a recording link to you on the group so that at least you can do the practice on your own tomorrow and on the weekends, which is Saturday and Sunday, because normally we don't come live on Saturday and Sunday also.
So we'll be back again on Monday at 9:30 p.m. IST. So lots and lots of gratitude and love to each one of you for joining and whoever is watching us online through YouTube. So thank you so much.